हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आज स्टडी अड्डा। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के एसएसटी के वीवर्स, आयरन, स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। सो इसका आंसर है गाइस चिन्स, कोसाइज एंड बंधना। बंधना वर्ड was derived from the word bandhan. It referred to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. Next देखते हैं, what is jamadni? इसका आंसर गाइस, jamadni is a fine muslin on which decorative motifs are woven on the loom, typically in grey and white. Next question देखते हैं गाइस, question number 3. What is bandhana? इसका आंसर गाइस, bandhana is a brightly colored and printed scarf for neck and head. This word was derived from the word bandhan. It referred to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. Next है guys, who are the Agaryas? So guys, इसका आंसर नीचे दे रखा है, आप लोग रीड कर लीजिएगा अच्छे से एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट, द वर्ड चिन्स कम फ्रॉम द, इसका आंसर गाइस चिन्स। सेकेंड, टीपू's sword was made of, इसका आंसर गाइस wood, steel. थर्ड, India's textile exports decline in the dash century, इसका आंसर गाइस 19th. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, how do the names of different textiles tell us about their history? सो गाइस, इसका आंसर नीचे दे रखा है एंड इस आंसर में आपको 7 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 एंड गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड द वुल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन द अर्ली 18th सेंचुरी? गाइस, इसका आंसर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड इन द अर्ली 18th century. The wool and silk producers in England found themselves unable to compete with Indian textile. Guys, आगे का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, how did the development of cotton industries in Britain affect textile producers in India? So guys, इसका आंसर नीचे दे रखा है, आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसमें आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं एंड आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द 19th century? सो गाइस, इसका आंसर है, देयर वर सेवरल रीजंस. फर्स्ट, द न्यू फॉरेस्ट लॉज ऑफ द colonial government prevented people from entering the reserve forest. Now it became difficult for the iron smelters to find wood for charcoal. Getting iron ore was also a big problem, hence many gave up their craft and looked for other jobs. So guys, आगे के पॉइंट्स आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, what problems did the Indian textile industry face in the early years of its development? So guys, इसका आंसर है, during the early period of its development the textile industry in India faced many problems. So guys, इसमें आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, what helped TISCO expand steel production during the First World War? So guys, इसका आंसर है, before the First World War India imported British steel for rails. When in 1914 the war broke out, steel produced in Britain now had to meet the demands of the war in Europe. Guys, आगे का आंसर आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, find out the history of any craft around the area you live in. You may wish to know about the community of craftsmen, the changes in the techniques they use and the markets they supply. How have these changed in the past 50 years? So guys, देखते हैं history of handloom weaving. First point है guys, spinning of thread. Second, weaving by dulahas in village. Third, scale of the fabric in the local market.
Fourth, looms were set up. Fifth, fabric woven for local, national and international markets. Fifth, power looms. Sixth, international markets. गाइस आगे का आंसर आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच गाइस.